Okay, so we saw in the previous lecture what sampling is, the concept of Nyquist theorem, and the aliasing principle. Now, in this lecture, I will start with uh, a bit of a mathematical derivation of sampling and its reconstruction. So, sampling of continuous time signal. So, if x of t, xc of t is a signal which we want to convert into a discrete signal. So it's a continuous signal and want to convert it to a discrete signal. We can use C to D converter, and you can get X of n. Then a discrete time system with impulse response H of n will do some processing on this input X of n, and you will get an output Y of n through the process of convolution. And if you pass it through a D to C converter, that is discrete to continuous time converter, you can get Y of t. Okay, you can get Y of t. Now, if you look at xc of t, this is the process of sampling which we want to look at. And what happens is that xc of t is multiplied with s of t, and then what you get is xs of t. This is passed through an impulse to sequence converter to get x of n. Okay. So what is xc of t? It is a continuous time signal. Let's suppose we have a continuous time signal like this. Xc of t, and if you multiply it with a train of impulses at t, 2t, 3t, 4t, 0 and minus t, so on. So हो ये रहा है कि this xc of t gets multiplied with this train of impulses s of t, and what you get as an output is xs of t. Okay, so xs of t क्या होगा कि ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ, तो जो भी t पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है उसको उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी, और वो नई वैल्यू सिर्फ t 2t 3t यानी मल्टीपल्स ऑफ t पे आपको मिल रही होगी. Okay, so s of t can be written as summation of n equal to minus infinity to infinity delta of t minus nt. And let me rub this. To draw what is the output of this signal xs of j omega. Okay,
So xs of t, rather xs of t. So xs of t will be कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आउटपुट होगी. So multiplying these two together get this output. So this output is this value, then this value, then this value, this value. So 0t, 2t, 3t पे आपको मुख्तलिफ impulses मिलेंगी. Okay. So इस impulse का क्या weight है? X of 3t. This is x of 2t. This is x of t. This is x of 0. Okay. And this is x of minus t. Because ये minus t पे exist कर रहा है. Right. So collectively, this is called xs of t, which is equal to xc of t multiplied by s of t, right? Or because xc of t is a summation, this is delta of t minus nt. So therefore, what you get is summation on n equal to minus infinity to infinity xc of nt delta of t minus nt. This is xs of t because हो ये रहा है कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत जो भी वैल्यू डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी की है वो एक्स सी ऑफ एन टी की हो जाती है, एक्स सी ऑफ टी की बजाय एक्स सी ऑफ एन टी हो जाता है. एंड नाउ this is what you get as x s of t. So x s of t को अब हमने so it's still impulses और अगर हम इनको convert करना चाहें into sequences तो हमारे जो ब्लॉक डायग्राम में इम्पल्स टू सीक्वेंस कन्वर्टर था हम उससे गुजारते हैं. सो इम्पल्स टू सीक्वेंस टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कन्वर्टर या सीक्वेंस कन्वर्टर जो है उसमें हम ये कर रहे हैं कि वी टेक द नोशन ऑफ टाइम away from this xs of t and what you get is x of n कि जिसमें आपके पास -1 0 1 2 3 और ये n की फॉर्म में आ जाता है बिकॉज आप क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सेस है इसमें t से कैपिटल T से डिवाइड कर रहे हैं इसको. ओके. तो जो भी वैल्यू इस इम्पल्स की आपको मिल रही है उसको आप सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और वही वैल्यू रिटेन कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल थिंग दैट यू नाउ हैव. अब once you take the notion of time away और divide कर देते हैं with capital T by dividing the axis by capital T तो हमको क्या मिलता है x of n which is summation k equal to minus infinity to infinity xc of k delta of n minus k. And what it is the sum of weighted shifted impulses, right? जैसे x of n हम कहते थे तो कि इट्स अ सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड इम्पल्सेस. तो इसी तरह हमें ये वेट्स मिल गए हैं डेल्टा ऑफ n माइनस के. तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हमने n को रिप्लेस कर दिया है बाय k. So that's why you have k here, you have n minus k here, and
overall, because it's instead of t, now you have n in the time axis. तो आपको जो x of n मिल रहा है, that is a sum of weighted, these are the weights, and these are the shifted impulses.